BPharm semester 1, new syllabus, new subjects and no idea about how to study. So in this video, I'll tell you exactly how to study in the BPharm semester 1. Hi, my name is Bhakti Patel, and if I ever get a chance to study in the BPharm semester 1, here is how I would have studied it. So let's get started with the video. So the very first thing which I'll do is I'll download the syllabus of the BPharm semester 1 and take a print out of it, which is basically a hard copy of it. Now the second thing which I'll do is PYQs, previous year question papers, but I'll do it on the basis of two things. First is for the subjects in which I can get the PYQs, and for the subjects in which I won't get the PYQs. So on the first list, the subjects are: first is human anatomy and physiology and pathophysiology. The second subject is general pharmacy. The third subject is introduction to pharmacognosy. The fourth subject is inorganic and analytical chemistry. Now the second thing is the subjects which does not have the PYQs. So in that list, the two subjects are there. First is what? Basics of Python programming in pharmaceutical science, and the second subject is communication skills, like it's basically psychology and communication skills. So this is the first segregation. Now the second segregation is on the basis of the subjects which I'll study one by one and the subjects which I will study all together. Like one by one means what? On the regular basis, the subjects which I have to study. The second are the subjects those which I can complete 2-3 units altogether. So let's divide it into that. So for the regular one, the subjects which are is inorganic and analytical chemistry. Now the reason behind adding this subject into it, because there may be different reactions into it, different elements we have to remember it. We cannot remember it in the one go. We need day-to-day practice into this subject. So that's why this subject we have to study one by one. Now the second subject here into this list is basics in Python programming and pharmaceutical science. So these two subjects are the subjects which we will study on the regular basis. Now the subjects which we will study all together. So the first subject is human anatomy and physiology and pathophysiology into it. The second subject is general pharmacy. The third subject is introduction to pharmacognosy. The fourth subject is communication skill. Now the another step which I'll do is I'll download the previous year question paper. But see, in the same one, what I think I would have done is I would have segregated the questions. Like see, once I download the previous year question paper, but I'll go subject wise. I won't do this thing that I'll download the PYQs of all the subjects, because see, I'm not going to study all the subjects together. I don't have the idea about which subject to study first and anything of that sort. So the subjects which I feel I have to study first, I'll download the PYQs of that subject only. So here I'll start my preparation with the very first subject, which is human anatomy and physiology and pathophysiology, because this I can self-study myself. So that's the reason I'll start with this subject. So I'll download the previous year question paper of this subject and I'll look up in the unit 1 section कि unit 1 में कौन से टॉपिक्स है पहले, और जो previous year question papers है उसमें कौन से टॉपिक्स पूछे गए हैं from the unit 1. मतलब उस टाइप से I'll note it down in the notebook or mark it down in the syllabus itself कि इसमें से ये टॉपिक पूछे गए. But yes, there are also different segregation, like 2 marks के लिए ये टॉपिक में से ज्यादा पूछे गए, 3 marks के लिए ये इसमें से ज्यादा पूछे गए, या like 4 marks, 5 marks. So we have basically 2 marks, 3 marks, 5 marks and 10 marks. मतलब ये 4 होते हैं, या तो फिर कुछ में like 2 marks, 5 marks and 10 marks के ही questions होते हैं. So I'll segregate on the basis of that कि unit 1 में से क्या question पूछे गए, कौन से question पूछे गए, if I ever start with the human anatomy and physiology and pathophysiology subject. So after that, I'll start reading it. So our third step, like see, our first step was to download the syllabus, print it. Second step was to download the PYQs, and then we have seen the segregation also into it. And the third step is we'll start studying it. So yes, here we are starting to study the HAP subject. So देखो HAP का subject में कैसे पढ़ती वो तो मैं बताती हूँ. So see, I will have seen कि मुझे ये book पता है कि मैं इस book में से पढ़ने वाली हूँ. Like for example, it's like Nirali Prakashan book, which I have told in one of my back books to refer in the BPharm
B.Pharm सेमेस्टर 1 2026 में जो भी सिलेबस है उसके लिए। आई लुक अप कि सिलेबस में ये टॉपिक में है, ये कैसा कंटेंट दिया हुआ है, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई विल सी एट ऑल दोस थिंग एंड आई विल स्टडी द टॉपिक्स विच आई वांट टू स्टडी। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग, आगे आगे से ही स्टार्ट करूंगी मैं। उसमें से 2-3 टॉपिक्स या 3-4 टॉपिक आज के दिन डे 1 पे पढ़ लूंगी एंड द टॉपिक्स विच आई हैव स्टडीड इन द डे 1 आई विल डू रिविजन फर्स्ट ऑफ इट ऑन द सेकेंड डे एंड देन आई विल डू द डे 2 पे जो मैंने टॉपिक्स अलॉट किए हैं वो मैं पढ़ लूंगी। सो आफ्टर दैट ऑन द डे 3 ऑल्सो आई विल डू द सेम थिंग, पहले डे 1 के टॉपिक को रिवाइज कर लूंगी एंड देन आई विल रिवाइज द डे 2 टॉपिक एंड देन आई विल स्टडी द डे 3 टॉपिक्स जो मैंने लिए हुए हैं पढ़ने के लिए। सो दैट इज हाउ आई वोंट फॉरगेट इट जो मैंने पढ़ा हुआ है। नाउ सी, कोई बोल रहा होगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये मतलब कहाँ से स्टार्ट करो। सो स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट 1 इटसेल्फ, यूनिट 1 से ही स्टार्ट करना करो बिकॉज यूनिट 2 इट्स लाइक डिफरेंट गैप हो जाता है, उस गैप में हमें पता नहीं चलता कि क्या है और कनेक्शन नहीं बैठ पाता इसलिए। सो आफ्टर दैट ये डे 1 डे 2 डे 3 मतलब ऐसे करते 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 मैंने रिविजन कर लिया सब कुछ और मेरा यूनिट 1 खत्म हो गया। सो उसके बाद मैं 2 दिन एक्स्ट्रा दूंगी जिससे कि मैं यूनिट 1 को प्रॉपरली एकदम अच्छे से रिवाइज कर पाऊँ, एकदम अच्छे से सारे क्वेश्चंस जो भी है सॉल्व करने वो मैं कर पाऊँ। सो अवर थर्ड स्टेप वाज टू स्टार्ट स्टडीइंग एंड इवेंचुअली डू अ रिविजन विच इज ऑल्सो अ वेरी नाइस रिविजन जिससे कि हम भूले नहीं यूनिट 1 चैप्टर को। एंड आफ्टर दैट देखो हमने HAP की कौन सी कैटेगरी में रखा हुआ था, वी लाइक ऑल टुगेदर की कैटेगरी में रखा था जिसमें हम ज्यादातर यूनिट कवर कर सके। सो इफ आई हैव द टाइम सो फिर मैं सेकंड यूनिट भी साथ ही कंप्लीट कर लूंगी बिकॉज सी व्हाट इज दिस, क्यों साथ में ही करना है बिकॉज सी HAP इज ऑल अबाउट द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ बॉडी का जो भी है वो। सो हम साथ में पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 1 यूनिट पढ़ लिया फिर बाद में कुछ पढ़ लेंगे। वी कैन स्टडी 3 यूनिट्स ऑल्सो टुगेदर इनटू इट। और मुझे पता है कि मिड सेम की जो एग्जाम होने वाली है उसमें यूनिट 1 आएगा, यूनिट 2 आएगा और यूनिट 3 आएगा। सो एनीवेज लाइक इफ आई स्टडी 2 यूनिट्स आई विल बी सेफ हैंड कि एक सब्जेक्ट का मिड सेम का जो भी पोर्शन है वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड आफ्टर दैट आई विल डू दिस थिंग फॉर द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल लाइक जनरल फार्मेसी, तो मैं भी उसके 2 यूनिट पहले ही स्टार्टिंग में सब साथ में ही पढ़ लूंगी ताकि मुझे ज्यादातर कंफ्यूजन नहीं हो, मैं भूल नहीं जाऊँ इसके लिए। एंड देन फॉर द फार्माकोग्नोसी ऑल्सो आई विल रिपीट द सेम थिंग एंड फॉर द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो आई विल रिपीट द सेम थिंग। अब सब्जेक्ट जो मुझे रेगुलर पढ़ने होंगे सो व्हाट आई विल डू इट कि उसमें से एक टॉपिक या 2 टॉपिक मैं एवरी डे करती ही जाऊंगी। आई विल अलॉट द टाइम फॉर इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मॉर्निंग में मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ सो इवनिंग में आके मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूँ। सो कंटिन्यूएशन में उसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट हमारा कवर अप हो जाएगा। एंड सी व्हाइल रीडिंग आई विल कीप फ्यू ऑफ द थिंग्स इनटू द माइंड। सो हियर कम अवर फोर्थ स्टेप विच इज लाइक व्हाइल स्टडिंग व्हाट पॉइंट्स टू रिमेंबर कि आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए और आंसर में कौन से पॉइंट्स होने चाहिए एग्जैक्टली। सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच विल डू इज कि कोई भी आंसर हो उसका इंट्रोडक्शन तो रखो ही। इंट्रोडक्शन में स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन, द मेन थिंग इज डेफिनेशन एंड 3-4 एक्स्ट्रा पॉइंट्स या फिर उसमें कोई ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, कोई रूल्स हो सकते हैं या तो फिर कोई प्रोसेस हो सकता है। ओके, सो प्रोसेस लाइक को शॉर्ट में भी प्रोसेस को आप समझा सकते हो। एंड देन द सेकंड पार्ट कम हियर इज द मेन बॉडी। सो मेन बॉडी में आपका जो भी प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करो इन द वर्डिंग्स फॉर्म एंड देन इन द फ्लो चार्ट फॉर्म और फिर उसको डायग्रामेटिक वे में भी एक्सप्लेन करो। नाउ द थर्ड स्टेप इज कंक्लूजन इन कैन बी इंक्लूड लाइक एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या तो फिर इट कैन बी लाइक फ्यू ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द आंसर। तो बेसिकली ज्यादातर ग्राफ और वैसे सब इंक्लूड करना चाहिए ताकि तुम्हारा पेज भी भरा भरा सा लगे एंड लेंथ ऑफ द आंसर ऑल्सो इज बेटर। ना उसी बाकी के सब्जेक्ट्स भी ऐसे ही पढ़ते जाओ जो भी तुम्हें ठीक लगे लाइक यूनिट वाइज कि मुझे ये सब्जेक्ट पहले करना चाहिए या तो फिर आफ्टर। लाइक सी इफ आई वुड हैव गॉट अ चांस तो मैं कैसे करती कि HAP पहले पढ़ लेती, फिर जनरल फार्मेसी पहले पढ़ लेती एंड देन जो भी वो सब्जेक्ट्स है नए वाले सब्जेक्ट है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है सो आई वुड हैव डन इट कॉलेज के साथ साथ। कॉलेज वाले जब पढ़ा रहे हैं मैं उसके साथ साथ ही पढ़ लेती। सो जिसकी वजह से लाइक आई वुड हैव नॉट लैग्ड इट। और यस ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पे हमें 3 सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि HAP हम पढ़ रहे हैं तो फिर दूसरा सब्जेक्ट लाइक बेसिक्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग भी हमें पढ़ना पड़ रहा है और जो इनऑर्गेनिक वाला है वो भी। बट ट्राई टू डू लिटिल सिंपल टॉपिक्स, नॉट बहुत ज्यादा लेंथी मत रखो। एंड यू कैन डू वन थिंग दैट इज HAP वाला जो भी सब्जेक्ट, एक वीक में HAP के 2 यूनिट्स में पढ़ लूंगी वैसा सब, क्योंकि इट्स लाइक सैटरडे संडे वी हैव अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम लाइक फ्राइडे सैटरडे संडे, तो उसमें हम इजीली इतना सारा पढ़ सकते हैं। एंड देन अदर थिंग कि जिस सब्जेक्ट में एक प्रीवियस क्वेश्चन है सो उस सब्जेक्ट में प्रीवियस क्वेश्चन को रिफर करो। फॉर एग्जाम्पल हमने सेग्रीगेट किया था कि ये 2 टाइप में कि जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन है जिसमें नहीं है प्रीवियस क्वेश्चन। सो ट्राई टू फ्रेम योर ओन क्वेश्चन जिससे कि तुम्हें हेल्प कर सके कि हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन इफ दे आस्क्ड इट सो आई वुड हैव आंसर्ड दिस। लाइक 2 मार्क्स के भी है सिलेबस में, लाइक देयर आर 2 मार्क्स
questions they will ask. So try to frame 2 marks questions, like generate your own question bank. This also which you can do it. So yes, we have talked a lot about syllabus. So download the syllabus is one of the important thing. Then we have talked about the previous year questions paper, like few subjects इसमें question paper लाने होते हैं, जिसमें नहीं हो you can do it both. And third is about how to study it, and fourth is about the revision techniques also, in which we have covered it in the third itself. And in the fourth, like answers कैसे frame करने चाहिए, and fifth was all about the other subjects also we have covered it. So I hope this video was helpful to you, and please do like, share, subscribe, comment, and thank you for watching. Have a good day. Bye.